everyone, welcome to today's class. We will start with the introductory class of mathematics, the first chapter, which is more on large numbers. Let us first learn the objectives. We will study about understanding 7-digit numbers, 8-digit numbers, 9-digit numbers, the place value chart, Indian and international, comparing them and rounding off the numbers. Okay, so let's start. Here it is given the place value chart. Indian. There are two types of classification. One is Indian classification, another is international classification. In Indian classification, we can see there is ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs and 10 lakhs. Okay? And so on, like crore, 10 crore, etc. For example, 9951024. This can be placed in the place value chart as follows. हम क्या करेंगे? 4 को ones में बिठाएंगे, 2 को tens में, 0 को 100 में, 1 को 1000, 5 in 10,000, 9 in lakhs and another 9 in 10 lakhs. This is how we are getting a number 99 lakh 51,024. Okay? Now here is the international place value chart. यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे मिलियन आ जाएगा. वहाँ पे क्या था इंडियन क्लासिफिकेशन में 1000 और 10,000 तक ही था, लेकिन यहाँ पे 100,000 भी ऐड हुआ है, साथ ही million and 10 million. Okay, so here we are getting ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million and 10 million. ठीक है? For example, 96743682. This can be placed in place value chart as 2 in ones, 8 in tens, 6 in 100, 3 in 1000, 4 in 10,000, 7 in 100,000, 6 in million, 9 in 10 million. So we are getting the amount as 96,743,682. ऐसे हमें बोलना है if we are considering the international place value chart. Okay? Now let's understand the proper order. Ascending order and descending order. Ascending order means arrangement from the smallest to the greatest, and descending order means arrangement from the greatest to the smallest. अब suppose तुम लोगों की क्लास में कुछ लोगों का हाइट बहुत लंबा है, कुछ का हाइट छोटा है. प्रेयर लाइन में हम कैसे खड़े होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा, और अगर हम पीछे से देखें तो बड़ा से छोटा. ठीक है? वैसे ही यहाँ पे नंबर्स भी सजाया जाता है. जैसे देखो यहाँ पे 8,407, 9,554, 8,306, 5,071. इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो पहले सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 5,071. फिर आता है 8,306, फिर आता है 8,407 एंड देन 9,554. इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो क्या आता है? पहले 9,554, then 8,407, 8,306 and 5,071. Understood everyone? Okay, now understanding the shifting digits. अब यहाँ पे देखो, हमें तो पता है कौन सा स्मॉलर नंबर है और कौन सा ग्रेटर नंबर. अगर हम एक नंबर ले ले सपोज 496, ठीक है? 496 को अगर हम उल्टा करके लिखे तो क्या आता है? 694. तो इसमें ग्रेटर कौन सा है? 694. और स्मॉलर कौन सा है? 496. ओके, सो इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन? फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो उससे बड़ा है. हाँ, एंड द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द फॉर्मर वन. Okay, so now let's revisit the place value. This is the place value chart which I have already discussed earlier. Just have a look and then we will move on to the expansion of numbers. Okay students, so here it is given 54,278.
we have to expand this number. How are we going to expand? We are going to expand this. Just look at the following table. In the 10,000s place, it is given 50,000. In thousands, it is given 4,000. In hundreds, 200. In tens, 70. And in ones place, it is given 8. You already know the place value. 8 is ones, 7 is tens, 2 is hundreds, 4 is thousand, and 5 is 10,000. So it is very simple. Okay, 50,000 मतलब 5 के बाद 4 0. वहाँ पे नंबर देखो, जितना भी नंबर रहेगा पहले तुम्हारा 10,000 1 से शुरू करो, ठीक है, विच इज सिंपलर टू यू. अगर हम 1 से शुरू करें तो देखते हैं कि वंस के प्लेस में क्या है 8, फिर टेंस के प्लेस में 7 है, और उसके बाद में कितना नंबर है, एक नंबर है, मतलब हम क्या लिखेंगे 70. फिर हंड्रेड्स प्लेस में कौन है 2, उसके बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो हम लिखेंगे 200. वैसे ही हम देखते हैं कि ये एक्सपैंड हो गया है. 50,000, 4,000, 278. Okay? Now here's introducing the 10,000s. See here, greatest single digit number is 9. You all know that? When we add 1 to it, we get the smallest 2-digit number. Isn't it wonderful? Yes. So, greatest 2-digit number is 99. Similarly, if we add 1, we are getting the smallest 3-digit number. ऐसे ही करते जाओ, देखो, you'll get the greatest 4-digit number. After you adding 1 to it, you're getting the smallest 5-digit number. Understood, everyone? Okay, now let's see this. The smallest 7-digit number is 10 lakh. As it was earlier, like here you saw in this slide, the greatest 4-digit number is 9,999. You're adding 1 to it, you're getting the smallest 5-digit number. Similarly, here also you're getting the greatest 6-digit number, that is 9,99,999. You're adding 1 to it and you're getting the smallest 7-digit number, that is 10 lakhs. Okay? Similarly, you're getting the smallest 8-digit number, that is 1 crore. After adding the greatest 7-digit number to 1. All of you understood? If not, then just look at it once. You'll understand. You all are very smart. Okay, now the use of commas. In our Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, thousand, and then lakhs and crores. Commas are used to mark thousands, lakhs, and crores. Okay, just see this example. 5 crore 8 lakh 1,592. Just see the commas where it is placed. Just before the hundreds place, before the 10,000 place, before the 10 lakhs place. Okay? There are more examples, you can see it. Okay, moving forward. Now here comes the practice exercise. Just look at it. See if you can solve. Now listen very carefully because I'll be giving homework, okay? Question number 1. It is given 78 lakh 34,678. This you have to place in the boxes. So in the 10 lakhs place, what will be the number? 7. In lakhs, it will be 8. In 10,000, it will be 3. In thousands, it will be 4. In hundreds, 6. Tens, 7. And in ones, 8. By this method, you are going to solve B, C and D. This will be your homework, okay? Next, in each of the following numbers, write the place value of 5. Just see, students. The one number is 21,000. Is it? No, it is 21 lakhs 15,239. So the place value of 5 will be 5,000. See, where is 5? It is in the thousands place. Okay, so the place value will be 5,000. Okay, now 65 lakhs 90,743. In it, what is its place? The place value of 5 is 5 lakhs. Understood? C and D you will do on your own. I have explained where to put commas before hundreds, before 10,000s and
before 10 lakhs. Okay, this is how you are going to solve question number 3. Then write the expanded form. In expanded form, I have explained how to write 79,43,296. So after 7, how many zeros will be there? Say 3 and 3, 6. After 7, there will be 6 zeros. Plus, after 9, there will be 5 zeros. After 4, there will be 4 zeros. After 3, there will be 3 zeros. After 2, it will be 2 zeros. After 9, it will be 1 zero. And after 6, no zero. Okay, this is how you are going to expand. Next, write the standard form. Now, what is standard form? Standard form is just the opposite of expanded form. It is given in the expanded state. You have to add it up and write the standard form. So it will be 70,04734. That is 70,04,734. Okay? B and C, you are going to do it. Okay. Now see here what is given in your textbook. 1 crore, 2 crore, 3 crore and so on. This is another practice exercise for the international place value chart. Till now you have done all the Indian place value chart. Now we are going to forward to the international place value chart. 27 million. Okay, so million means there will be 6 zeros. 27 million means what? After 27 there will be 6 zeros. Then 5,045,817. What will be it? 5045817. Okay? Now it is given in words. You just have to reverse it and write it in. Sorry, this is given in numbers and you have to write it in words. Rewrite by using commas according to each of the two place value systems. Now here comes the comparison. इंडियन सिस्टम में भी लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है. ठीक है, कॉमास के साथ. अब इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कहाँ होंगे? इंडियन सिस्टम में कहाँ था बोलो तो? इंडियन सिस्टम में 100 के पीछे पहले था, फिर 10,000 के पीछे था, फिर 10 लाख के पीछे था. इसमें क्या होगा? 100 के पीछे होगा, फिर 100,000 के पीछे होगा. ठीक है? Okay, now we are up to the last part, that is rounding off. Rounding poem. Here's a poem for you. Find your place, look next door, 5 or greater, add 1 more. All digits in front stay the same. All digits behind, 0 is your name. Here is another example. Suppose, understand it very carefully, okay? 63. Now you make a line. One end write 60, another end write 70. In between it comes 65. Now 63 is more close to which number? 60 or 70? It is more close to 60. So the round to the nearest 10 will be 60. Because here we are seeing the tens place. ठीक है? उसके बाद देखो 524. ये जो नंबर है इसमें टेंस प्लेस कौन सा है? 2. ठीक है? अब 524 ये इसका अगर हम सिर्फ टेंस प्लेस में देखें तो इट इज मोर नियरेस्ट टू 520 देन 530. ठीक है, आपको सिर्फ जो प्लेस कंसिडर करने बोला जाएगा आप उस प्लेस को एक लाइन में बिठाएंगे. ठीक है, जैसे 524 इसको आप लिखेंगे 520 और 530 के बीच क्या आता है? 525. 524 525 से कम है और 520 की तरफ ज़्यादा जाता है तो ये होगा 520. ठीक है, वैसे ही राउंड टू नियरेस्ट 100. पहले क्या दिया है? 435. नो जस्ट लुक एट इट. 435 मतलब 100 प्लेस कौन सा है यहाँ पे? 4. एक लाइन ड्रॉ करो, एक साइड में लिखो 400 और एक साइड में लिखो 500. बीच में लिखो 455. 435 जो है वो किसके बीच में आता है?
455 और 400 के बीच में, ठीक है। वो 455 से कम है, मतलब ज़्यादा 400 की तरफ उसके पास है, इसीलिए उसका राउंड टू द नियरेस्ट 100 होगा 400, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दिया है 63,320। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, मतलब 1000 प्लेस कौन सा यहाँ पे 3,320, मतलब 3 वो जो है अब उसको सिर्फ कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास कौन सा दो नंबर मिल जा रहा है 63,000 और 64,000, क्योंकि हम सिर्फ 3,320 को देखेंगे और 6 को भूल जाएंगे अभी के लिए, ठीक है। फिर हमें चेंज लाना है वो 1000 प्लेस में, राउंड ऑफ हमें उसको करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 63,320 किसके बीच आ रहा है, तो इट इज मोर नियरर टू 63,000, तो राउंड ऑफ करने से उसका क्या आंसर होगा 63,000। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर है, आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, दिस इज another practice exercise 1.4. Compare each pair of numbers by using the sign less than or greater than. Two numbers are given. ठीक है? You have to be very carefully observing the two numbers and you have to put the sign. The numbers are 2,34,56,789 and the other number is 2,43,78,109. So which one is smaller? Obviously the first one. So you'll put the smaller than sign. Okay? Now question number 2. Round off the following numbers. Here it is given 34,56,190 to the nearest 10,000. Now what is the 10,000 place here? 5. Can you see it? 56,190. Now what we have to do is just make a line and one side write 56,000, another side write 57,000. Then it will be near to 56,000. Okay? Here are the MCQs. These are very easy. I have completed the topics. I hope you could understand. सबको समझ में आया ना? एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, फिर ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? That's the end. Thank you everyone. Just stay safe and study. Okay?